So good morning students. Now I will proceeding with my next topic, that is hyponatremia. It is also an electrolyte imbalance. Okay, it refers to when hyponatremia occurs. Hyponatremia means there is deficit amount of sodium in our body. Okay, so normal value of sodium is 135 to 145 milliequivalent per liter. If there is lack of sodium level, means below 135 milliequivalent per liter, okay, in our body, then there is a sodium deficit will occur, okay, or the hyponatremia will occur. It refers to the serum sodium level, that is normal level means 135 to 145 milliequivalent per liter, and below to this level. Okay, कब ये occur होगा? When the ECF means extracellular fluid cause होगा by the loss of sodium or gain of water. Means इसमें क्या occur होगा? ECF fluid. ECF we have studied about the ICF and ECF ना, intracellular fluid and extracellular fluid. Intracellular means inside and extracellular means outside. ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जितने कैटायंस एंड आयंस हैं उसमें क्या होगा? सोडियम की लैकिंग होगी. ठीक है, सोडियम लैक होगा और वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा. वो किसकी वजह से हो सकता है? या तो फिर जो पर्सन है वो सोडियम इनटेक कम ले रहा है और सोडियम आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है? वाटर इनटेक इंक्रीज हो रहा है, सोडियम इनटेक कम हो रहा है. उसकी वजह से ये हो सकता है. ये कंडीशन 2 या 3 कंडीशंस हो सकते हैं. इट इज़ अ कंडीशन ऑन द लोअर लेवल ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम. इसकी वजह से सोडियम लेवल जैसे ही हमारी बॉडी में कम होता है, वैसे जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है. और ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस ऑकर होने लगता है. रिजल्ट्स इन द ECF मीन्स इसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो कहाँ पे मूव कर रहा है? थर्ड स्पेस शिफ्टिंग. ओके, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग मीन्स ये कहाँ पे जा रहा है? सेल्स में जा रहा है. ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपार्टमेंट है ना, उसमें क्या हो रहा है? बाहर का फ्लूइड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? सेल्स में शिफ्ट हो रहा है. तो सेल्स बिकम स्वेल्ड. ठीक है, जितना अमाउंट सेल में फ्लूइड चाहिए वो है, फिर भी क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जाके सेल्स में शिफ्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई द सेल्स बिकम स्वेल्ड. ओके, वाई इट इज ऑकर? ड्यू टू द एटियोलॉजिकल कॉजेस. कोई भी कॉजेस हो सकता है. थर्ड स्पेस शिफ्टिंग हो सकता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग. उसकी वजह से क्या हो रहा है? सोडियम लॉस हो रहा है, अमाउंट ऑफ सोडियम लॉस, और द वाटर गेन इंक्रीजेस. ठीक है, या तो फिर वाटर हम ज़्यादा ले रहे हैं और सोडियम अमाउंट कम ले रहे हैं, या सोडियम ज़्यादा लॉस हो रहा है, वाटर लॉस नहीं हो रहा है. उसकी वजह से फ्लूइड्स मूव हो रहा है फ्रॉम द लोअर कंपार्टमेंट. मीन्स ऑस्मोसिस क्या है? लोअर टू हायर. ठीक है, मूव्स ये सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम द लोअर कंपार्टमेंट टू द हायर कंपार्टमेंट. ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहाँ से मूव हो रहा है? अपने कंपार्टमेंट से मूव होके कहाँ हो रहा है? इंट्रासेल्यूलर स्पेस में जाके वो शिफ्ट हो रहा है. उसकी वजह से सेल्स क्या हो रहा है? स्वेल्ड हो रहा है, और सेल्स कंटेन्स मोर फ्लूइड एंड ब्लड वेसल्स कंटेन लेस. ठीक है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कम फ्लूइड हो रहा है और सेल्स में ज़्यादा हो रहा है. उसकी वजह से क्या क्या कंडीशन ऑकर हो रहा है? सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, हाइपोवॉलीमिया ऑकर हो सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम लॉस हो रहा है. जब सोडियम लॉस होता है, ठीक है, सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. आप देखना ओल्ड एज में या तो फिर आपको अगर सोडियम की लैकिंग होगी, कमी होगी, तो आप क्या होगी? डिसओरिएंटेड मीन्स कन्फ्यूजन हो जाएगा. 2 डेज 3 डेज आप सॉल्ट नहीं लो तो आपको क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा. आप जो याद कर रहे हो वो भूल जाओगे. ठीक है, डिसओरिएंटेड हो जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे. ये सब रीज़न है हाइपोवॉलीमिया के. फिर फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स जो कॉज करता है हाइपोनेट्रीमिया मीन्स GI डायरेटिक्स ज़्यादा ले रहे हैं,
उसकी वजह से सोडियम लॉस हो रहा है। जैसे कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी वाले डिसीज़ में इंसफिशिएंसी वाले पेशेंट हो सकते हैं। फिर गेन ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर गेन हो रहा है, जैसे SIADH में क्या हो सकता है, या तो फिर हम डेक्सट्रोज 5% हम ज़्यादा दे रहे हैं पेशेंट में SIDH में, उसकी वजह से भी ये ऑकर हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में हम लगा दे रहे हैं डेक्सट्रोज, तो हमको भी जब हम फ्लूइड पेशेंट को देते हैं तो हमको ऐसा नहीं है कि सलाइन देना है तो हम दे रहे हैं कोई भी, जितना रिक्वायरमेंट है पेशेंट का सिर्फ उतना ही हमको इन्फ्यूज़ करना है, अदरवाइज पेशेंट में हैव सीवियर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, you have to keep this in mind. हैंग फ्लूइड्स थ्रू द स्वेटिंग, मीन्स स्वेटिंग के थ्रू एक्सेसिव लॉस हो रहा है, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल फिस्टुला हो गया, डायलिसिस हो गया, इसके थ्रू ये दीज आर द कंडीशंस थ्रू विच द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम लॉसेस। फिर किडनी डिसीजेस हो गई, ये सर्टेन पाइलोनेफ्राइटिस, यूरीमिया, डायरेटिक्स, कीटोएसिडोसिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दीज आर द कंडीशंस इन विच वी आर हैविंग एक्सेसिव, मीन्स पर्सन इज हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, ओके, और ड्यू टू द यूज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डायरेटिक्स, that's why this results in the excessive loss of the sodium through the urine. Okay, pyelonephritis is a type of renal disease. Your chronic uremia means there is loss of the extra amount of urine. And the next is the endocrine diseases. Some of the endocrine diseases in this also there is excessive loss of sodium. Okay, there is a depletion of sodium. As you have earlier studied in earlier classes, that if the patient is having diabetic mellitus, then there is the excessive loss of urination. Means you have studied about the 3 P's now. 3 P's means what are the 3 P's? Polyuria, polydipsia and polypepsia. Okay, there is excessive thirst, excessive hungerness and excessive loss of the urine. Okay, in the other condition, extensive burns, generalized dermatitis, means if the patient is having loss of sodium, okay, then patient is having itching. ओके, जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो हमको इचिंग होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है पेशेंट की बॉडी में, तो उसको डर्मेटाइटिस का कंप्लेन रहता है. ओके, इन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, if the patient's body loses the sodium, then patient is not feeling hunger, means patient is having anorexia, he or she is having severe nausea and vomiting. ठीक है, फिंगर प्रिंट ओवर द स्टर्नम, मीन्स व्हेन वी आर टचिंग अ स्टर्नम बाय द हेल्प ऑफ फिंगर्स और द थंब, देयर इज अ print. Okay, that means patient is having lacking some electrolyte like sodium, magnesium. Okay, muscle cramps, if we are having the less amount of sodium in our body, then we are having the cramps ना, means झुंझुनी हमको चढ़ना स्टार्ट हो जाती है. फिर seizures, means there is a, if the severe loss of sodium in our body, then there may be chances to have a seizures. And patient may go in, means patient can have a severe condition like coma. There is a focal weakness and hemiparalysis, means one side paralysis patient. If the it may be upper side or lower side, one side or another side. Okay, there is a paralysis. In the diagnostic procedures, we are doing the electrolyte imbalances, means we are doing the test for HB, means hematological examination, as well as for the biochemistry. In the HB, we are seeing the level of HB of the patient and WBC counts, as well as in the electrolyte imbalance we have to, in the biochemistry we have to assess the bilirubin, urea, okay, BUL level, as well as electrolyte imbalances. In the through the electrolyte imbalance we have, means doctor will diagnose whether the patient is having hypo or hyper. Okay, means which electrolyte imbalance he or she
got. Okay, in the serum means by taking the diagnostic procedures, the doctor can know that sodium means patient is having the lack of sodium. Okay, serum osmolarity increase होगी, specific gravity of the urine decreased होगा. अगर हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को ड्यू टू SIADH मीन्स सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन की वजह से अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है तो देन इन द यूरिन सोडियम इज ग्रेटर देन द 20 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, अगर हम यूरिन देखेंगे सोडियम में ये यूरिन में सोडियम देखेंगे तो 20 मिलीग्राम पर लीटर से ग्रेटर होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ से होगा, 1.001 से होता है ना, तो इसमें 1.0012 रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी. इन द मेडिकल मैनेजमेंट एज वी ऑलरेडी नोन दैट इफ द पेशेंट इज हैविंग डेफिशिएंसी सो वी हैव टू इन्फ्यूज और वी हैव टू गिव द that electrolyte. Okay, so we have to replace the sodium by administration by directly through the mouth. If the patient is able to take through mouth, so we are providing the salt or means salt, lemon water, or directly if the patient is not able to take through the mouth, then we have to administer the sodium. Okay, by mouth or through the angio or through the parental nutrition means through the angio. फिर पेशेंट डज नॉट कंज्यूम सोडियम, अगर नहीं कर पा रहे तो हमको आइसोटोनिक सॉल्यूशन लाइक 0.9% NaCl वी हैव टू प्रोवाइड. ओके, बट ये भी हमको ध्यान में रखना है कि वेदर पेशेंट इज हाइपरटेंसिव और ही और शी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ हार्ट डिसीज. ओके, उसमें भी क्या होना चाहिए, हमारा एक्सेस अमाउंट में सोडियम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर गेट इंक्रीज्ड. Okay, so we have to keep in mind this history, patient's history. Okay, so the serum sodium level must not be greater than 12 milligram per liter in 24 hours. In the last 24 hours, there may not be increased, may not be greater than this amount. Because to avoid the neurological dysfunction. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को हमको ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए. और वाटर का रिस्ट्रिक्शन हमको पेशेंट को देना है. वाई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है कि सोडियम का लेवल कम हो रहा है और वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द वाटर मीन्स वी हैव टू गिव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 800 ml in 24 hours. In 24 hours only 800 ml of water we have to provide the patient who is having the hyponatremia. If the edema exit alone, sodium is restricted. Okay, अगर पेशेंट में एडिमा है तो फिर हमको सोडियम को रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा. and we have to assess means in the diagnostic procedures we are assessing the amount of sodium and water. So we have to assess the patient is having hyponatremia means whether patients sodium and water equally are losing or only the amount of sodium is losing. In that means उसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करना है. ठीक है, फिर इसमें हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, हमारा रोल क्या है, पेशेंट का वेट मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट हमको प्रॉपर करना है. फिर हमको पेशेंट को वाटर ड्रिंक्स प्रोवाइड करना है थ्रू जिसमें सोडियम हो. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन तो नहीं है वो चीज़ हमको देना है. फूड्स प्रोवाइड करना है जिसमें कि हमारा सोडियम लेवल ज़्यादा हो, वाटर लेवल कम हो. ठीक है, इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग सम GI सिम्टम्स लाइक नॉशिया, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, देन वी हैव टू रिपोर्ट to our doctor. Then if any type of medication we have to provide, we have to give to the patient. Okay, and we have to provide the extra amount of fluid. Extra amount means fluid is less but sodium amount of sodium should be increased. Okay, we have to assess for the cardiovascular changes also. If the patient is having some cardiac disease like hypertension, CAD, MI, then we have to assess that also, because otherwise the other complication will occur.
okay, other than hyponatremia. So because it can increase the fluid volume overload, means when we have to assess the neck vein. If the patient is having heart disease or any hypervolemia, ठीक है, अगर hypovolemia, if the patient is having the chances to have a hypervolemia, then we have to assess the neck vein. अवॉइड गिविंग लार्ज वाटर सप्लीमेंट्स, ठीक है, वाटर सप्लीमेंट्स कम देना है लेकिन हमको सोडियम देना है. ओके, दिस इज योर हाइपोनेट्रीमिया टॉपिक. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द hyponatremia. Okay, bye. If you are having any kind of doubt, you can ask me. Okay, bye, have a nice day.